continue our chapter, that is chapter 6, changes around us. Okay. Today we have to read what is given in activity 3rd. Activity 3 में क्या दिया है? Take some dough and make a ball. ठीक है, you have to take a dough. ठीक है, dough means समझते हो आटा. ठीक है, गूथा हुआ आटा. And make a ball. And you have to make a small ball. ठीक है, try to roll out a roti. And now you have to make roti. ठीक है, see figure 6.3. It is given that a ball of dough. ठीक है, आपका ball dough रखा है. And you just take, you have to make a ball. And after that you just roll out a roti. ठीक है, आपको रोटी बनानी इससे. You have to make a chapati. Maybe you are not happy with its shape or wish to change it back into a ball of dough again. Maybe if you are making chapati or roti, so you are not happy that with its shape and wish to change its shape. ठीक है, आप क्या करोगे, उसकी शेप आपको पसंद नहीं आएगी, you want to change its shape. ठीक है, so what you can do, you just make a ball again and then you start rolling. ठीक है, start rolling and make a roti and make roti. आप फिर क्या करोगे, रोटी नहीं पसंद आएगी, गोल नहीं है, आप क्या करोगे, फिर से उसका बॉल बनाओगे, फिर से नया शेप दोगे. ठीक है, now think about the 3 changes you observed in activity 1, 2 and 3. now you have to observe from activity 1 and 2 and 3. ठीक है, आपको चेंजेस हुए हैं इसमें. ठीक है, फर्स्ट में आपका क्या चेंजेस था? let's see that you just blow air into the balloon and it changes its shape. ठीक है, it changes its shape. If we let the air escape the balloon, then it regains its shape. In activity 2nd, just take a piece of paper and ठीक है, you have changed the sheet of paper into a toy aeroplane. Okay, but if you are getting tired, then you unfold the paper again. अगर आप थक जाओगे तो वापस उसे पेपर में एरोप्लेन को पेपर में चेंज कर दोगे. ठीक है, in activity 3, if you roll a chapati, if you don't like its shape, so you wish to change it back. ठीक है, so there are 3 changes in activity 1st, 2nd and 3rd. What do they have in common? अब इन सब में common क्या है? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? Is it possible to get the balloon back to its original shape and size? अब आपने उसमें एयर फिल किया था, बलून क्या हो गया, बड़ी साइज का हो गया. फिर अगर इसमें एयर निकल गई, so it regains its shape. ठीक है, it regains its shape. उसका जो शेप पहले था वही हो गया. Now the second question is, was the size of paper same as before and after making an aeroplane? Size and shape of the paper are same. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होगा, पेपर का सेम साइज था एरोप्लेन बनाने के पहले और एरोप्लेन बनाने के बाद, दोनों की साइज क्या थी, सेम ही थी. ठीक है, was it possible to get back the ball of dough again? Is it possible? Yes, it's possible. क्योंकि जितनी साइज का बॉल हमने लिया था पहले रोटी बनाने के लिए, वही रोटी से तो फिर हम रोटी बना रहे हैं, वही बॉल से. ठीक है, फिर हम रोटी बनाएंगे. So what do you conclude? Now what do you observe? In each of 3 activities, is it possible to get back to the material with which we started our activity? ठीक है, ये जो आपने एक्टिविटी की है 1st, 2nd and 3rd, so we observe that these changes are reversed. We can reverse the changes, these 3 changes. ठीक है, which is given in activity 1, 2 and 3. If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activities can be reversed. अगर आंसर आपका इस क्वेश्चन का yes है, it means that the changes in activity 1, 2 and 3 can be reversed. It can be reversed. ठीक है, why it can be reversed? क्यों रिवर्स हो रही है? Because we get the same shape and size of that thing. हमें जो भी चीज हमने ली थी वो उसका सेम शेप और सेम साइज मिल रहा है. ठीक है, now let us repeat the same
same piece of paper which you use in activity 2. ठीक है, activity 2 you are using a paper and change it into a toy aeroplane. So you have to take the same piece of paper, draw an aeroplane on it. You just draw the aeroplane on it and cut along its outline. अब उसके outline से तो सीजर की हेल्प से कट कर लो. Outline मतलब इसको बाहर से कट कर लो जितना इसका शेप हो एरोप्लेन का. ठीक है, see figure 6.4. An aeroplane is drawn on the paper. Now just cut this aeroplane. ठीक है, now is it possible to get the paper back again? आपको वापस वही पेपर शीट ऑफ पेपर मिल जाएगा? No. So it means this process cannot be reversed. Yes, it means yes. So this process cannot be reversed. ये आपका reverse नहीं हो सकता. Now see activity 6. Roll out the roti from the ball of dough again. Bake it on a tawa. ठीक है? Now activity 3 में आपने क्या किया था? You just take a ball and make a roti. Make roti. ठीक है? Now just roll out the roti. ठीक है? From the ball of dough again and bake it. अब आप उसे पका लो. ठीक है? तवे पे. See figure 6.5. Now is it possible to get back the dough again? Ball of dough again? No ना? अब आपकी रोटी पक गई है. रोटी पक गई है. आप वापस से अपनी बॉल चाहिए. Okay. So suppose you are asked the same three questions which you answered after activity 3. After activity 3 questions are asked. Is it possible to get the balloon back to its original shape and size? Is it possible to get the same paper before and after making aeroplane? Is it possible to get back the ball of dough again? So it is not possible. It is possible in activity 3 के बाद जितने क्वेश्चन पूछे थे, it is possible to get back the same thing. ठीक है? आप वापस but wait class wait. But in activity 4, 5 and 6 it cannot be reversed. ठीक है? The changes which have occurred in activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. Now you use a pencil and eraser. With repeated use their shape and size change. You are using a pencil and also eraser. ठीक है? So if you use daily, so their shape and size change. ठीक है? If the shape or size change, can we reverse this change? Is it possible to reverse it? No, it is not possible. ठीक है? You cannot reverse it. You must have seen a potter working on his wheel. ठीक है? आपने potter को देखा. potter कौन होता है? Who is potter? Who makes God? Yes, who makes God? Okay? Okay. So you have seen a potter working on his wheel. अब आपने potter को देखा होगा, वो अपने wheels से, wheels होती है, इसमें वो pot बनाता है. ठीक है? Shape देता है clay को. ठीक है? He shaped a lump of clay. Lump मतलब गट्ठा. ठीक है? किसी चीज को collective noun यहाँ पे use हुआ है. Lump of clay. ढेर सारा है तो वहाँ पे lump of clay use हुआ है. He shaped lump of clay into a pot. तो clay को किसने change करता है? Pot. Now can this change be reversed? ठीक है? क्या ये change reverse हो सकती है? He then bakes the pot in an oven. Wait. Yes. Before baking, he can change the shape. Let me speak classes. No one is speak. So when he shape a lump of clay into a pot, he can change his shape. ठीक है? lump of clay को जो clay use कर रहा है, तो clay को pot में change कर रहा है, तो pot को फिर से बिगाड़ के फिर से नया pot बना लेगा. ठीक है? अगर उसका shape बिगड़ जाएगा तो क्या करेगा? फिर से उसको क्या करेगा? वो आपको clay में change कर देगा और फिर से उसका नया pot बनाएगा. But if he bakes the pot in an oven, अगर उसने बेक कर लिया pot को, ठीक है? उसको पका लिया, पकाते हैं उसको, ठीक है? ओवन में. So now can this change be reversed? So when we bake the pot in an oven, it is not possible to reverse it. ठीक है? But before baking, he can reverse the pot. Some common changes are given in table 6.1
some common changes are given in table 6.1. See table 6.1. Ma'am, the name for cannot be reversed. Now see table 6.1. Some changes, some common changes. So you have to do this, okay, in your book. Now, first one is that draw egg to boil egg. You have to write is it reversed or not. Okay, draw egg to boil egg. आप इसे reverse कर सकते हैं कि don't tell me the answer. बैटर टू इडली, बैटर को आप इडली में चेंज कर सकते हो, ठीक है. बैटर टू इडली, अगर आपकी इडली प्रिपेयर हो गई तो फिर बैटर बनाना इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. नो. वेट क्लॉथ इज टू ड्राई क्लॉथ इज, गीले कपड़े को सूखा कर देना और फिर सूखे को गीला कर सकते हैं. इज इट पॉसिबल? सो यस, इट पॉसिबल. Yes, sir. वुलन yarn to knitted sweater. So वुलन yarn to knitted sweater. वुलन yarn से अगर हम स्वेटर बुन रहे हैं, knitting मतलब बुनना, ठीक है. So it is possible to convert knitted sweater into woolen yarn. Grain to its floor. Grain to its floor. So it is not possible to convert flour into grain. Cold milk to hot milk. ठीक है. Cold milk से hot milk बनाया. Now you will do this. Ma'am, it is yes. No, then don't tell me the answer. You will do it. It's your homework. 6.2. Ma'am, it book or copy? In book, in textbook. Okay, ma'am. Could there be other ways to bring a change? Is there any other way to bring a change? So we have to study this. We will read this topic. We all have seen the tools which are used to dig the soil. We all have used the आपने देखा है tools. ठीक है, see figure 6.6. You have seen these tools. Yes, ma'am. Tools are often heated before fixing wooden handles. ठीक है, wooden handles को पहले लगाने की, देखो ये हैंडल है, ये हैंडल है, ठीक है, और ये आपका आयरन का कोई भी मटेरियल है, ठीक है. तो ये क्या करते हैं, पहले आयरन को सेट करते हैं, पहले इसको शेप एंड साइज देंगे, ठीक है, इसको सेट करेंगे. आफ्टर दैट, ठीक है, दे फिक्स wooden handles. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? So you have to observe, you have to understand that how iron blade in these tools is fixed to wooden handle. कैसे fix होते हैं? So the iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. So you have seen iron blade in figure 6.6. ठीक है, in which wooden handle is fixed. देखिए यहाँ पे लिखा है wooden handle iron blade के साथ fixed है. Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. अब क्या होता है, ये जो ring होती है, see this figure में देखो ring बनी है, ठीक है. So this ring is slightly smaller. Slightly मतलब थोड़ा, ठीक है. It is slightly smaller in size as we compare to the wooden handle. Wooden handle से अगर compare करें तो इसकी जो ring की जो size होती है वो छोटी होती है. To fix the handle, the ring is fitted. Now, if you want to fix this handle, so we heat the iron. ठीक है, iron is heated and it becomes slightly larger in size. और ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी. जो ring हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी. It means it expand. ठीक है, expand means it becomes slightly larger in size. ठीक है. Now the handle easily fits into the ring. Now we can fix the handle easily into the ring because it expands. It expands means it becomes slightly larger in size. ठीक है, earlier पहले क्या था, ring is slightly smaller in size. Normally यही होता था. But if we heat the ring, then it expands. Now the handle easily fits into the ring. ठीक है, अब हैंडल आपका आसानी से रिंग में फिट हो जाएगा. When
कूल हो ठंडी हो जाएगी, गर्म रहेगी तो साइज बढ़ जाएगा, उसमें आप हैंडल फिक्स कर दोगे। बट अगर रिंग क्या हो जाए, ठंडी हो जाएगी, मतलब आपका जो आयरन प्लेट है वो आपका क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाए, ठीक है। और इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट टाइटली ऑन टू द हैंडल। फिर से क्या हो जाएगा, फिर से अपनी साइज क्या कर लेगा, एकदम कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना, ठीक है, साइज छोटी कर लेगा, ठीक है। It becomes slightly smaller in size and the handle fits tightly into it. Such a chain is also used for fixing the metal ring on a wooden wheel of a cart as is shown in figure 6.7. Figure C figure 6.7, ये देखो C figure 6.7 है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो रिंग बनी है, ठीक है। So same procedure we use to fix the metal ring on wooden wheel. अब यहाँ पे हमें क्या लगानी है, इसमें क्या देखो, आप बुलक कार्ड देखोगे तो यहाँ पे एक पतली से रिंग लगी होती है मेटल की, ठीक है, आयरन की कोई भी ऐसी रॉड लगी होती है, ठीक है, रिंग के बीच में। सो वी यूज द सेम प्रोसेस, we just heat the ring and fix metal rod into it, ठीक है। But not how it moves.